Indian Air Force is making relentless efforts to airdrop essentials items in flood-hit Silchar. What now poses as a major problem is the dearth of space to stock the relief items. The visuals on your screen speak volume of how grim is the situation in Silchar. With almost all areas filled with floodwaters, the Indian Air Force choppers have been left with no other option but to drop the relief items in water itself. Well, helpless people, on the other hand, could be seen bracing all odds to grab the food items airdropped by the Indian Air Force. Meanwhile, in order to further expedite relief operations, the Assam State Disaster Management Authority, or ASDMA, has deployed drones to deliver relief items. Besides, the police as well as the district administration is working round the clock to help the people of ravaged Silchar town. एज प्रिवेंटिव मेजर हमारे, क्योंकि चारों तरफ सड़कों पे पानी है तो हमारी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, इसलिए हम बोट से, और आज हम एक और एडिशन करेंगे कि आज हम डंपर्स जैसे कुछ एरिया में जा पा रहे हैं तो हम डंपर्स, जो बड़े डंपर्स हैं उनमें उसको लेके हमारी टीम्स को पेट्रोलिंग करने के लिए दिया है। तो हमारी टीम्स सब बाहर हैं, तो किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कोई अगर कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है तो बताइएगा। आप लोग किसी भी तरह से कोई चिंता मत कीजिएगा, पुलिस अलर्ट है एंड पुलिस आपकी सर्विस में है। हमारी तरफ से भी हम जितना हमारी कैपेबिलिटी है हम भी रिलीफ, जहाँ तक किसी को पानी का, किसी को इमरजेंसी मेडिसिन का ज़रूरत रहा है, हमको जिसने कॉल किया है हमने उसको वहीं पर रिस्पॉन्ड करके अपनी तरफ से एज अ पर्सनल कंट्रीब्यूशन, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऑफ कैलामिटी, दिस इज़ अ टाइम ऑफ डिज़ास्टर। तो इसमें सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके हम लोगों ने भी अपनी तरफ से लोगों को सुविधा पहुंचाने की कोशिश की है। बट समय थोड़ा इस तरह से है कि सबको सब तरफ से नहीं पहुंचाया जा सकता, तो लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो आई एम श्योर इन अ डे और टू हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। र्यूमर फैला है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग SOS कॉल्स कर रहे हैं। सो परसों रात, कल रात भी जिस तरह से SOS कॉल्स हमको मिले, उसको जब हमने रिस्पॉन्ड किया, जिस जगह से SOS कॉल आया वहाँ से हमने जब रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन आया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पानी की आवाज़ सुन के ये लोग घबराए हैं। तो लोग घबराए हुए हैं। मेरा यही सबसे अपील है कि काइंडली इस तरह से घबराइए मत, पैनिक मत कीजिएगा और र्यूमर मत फैलाइएगा। कहीं कुछ भी कंक्रीट है तो इमीडिएटली आपके पास कंसर्न्ड OC का, मेरा एडिशनल SP का, DSP का नंबर है, हमको इमीडिएटली कॉल कीजिएगा, हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। एज प्रिवेंटिव मेजर हमारे, क्योंकि चारों तरफ सड़कों पे पानी है तो हमारी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, इसलिए हम बोट से, और आज हम एक और एडिशन करेंगे कि आज हम डंपर्स जैसे कुछ एरिया में जा पा रहे हैं तो हम डंपर्स, जो बड़े डंपर्स हैं उनमें उसको लेके हमारी टीम्स को पेट्रोलिंग करने के लिए दिया है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ कैलामिटी, दिस इज़ अ टाइम ऑफ डिज़ास्टर। तो इसमें सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके हम लोगों ने भी अपनी तरफ से लोगों को सुविधा पहुंचाने की कोशिश की है। बट समय थोड़ा इस तरह से है कि सबको सब तरफ से नहीं पहुंचाया जा सकता, तो लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो आई एम श्योर इन अ डे और टू हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। All right, more, we are being joined over phone line with our correspondent from Silchar, Bikram Sarkar. So, Bikram, the situation is still grim in Silchar. So, tell us more on this. How is the present situation? Is it still learning? And we're also getting reports that the Indian Air Force is making relentless efforts to airdrop essential items in flood-hit Silchar. But there's a dearth of space to stock the relief items, Bikram. Well, Priya, as you have started, yes, the situation is still grim, and it is not just it's not seen that it's getting better. It's getting worse and worse. That's because as the days are passing by, people starving, their sustaining is getting critical. Because the district administration, yes, the Air Force is trying, but how far it is getting beneficial to the victims
It is the big question. There, somewhere we have seen, even the visuals are also saying that they are airdropping, but those things are getting into water, which is becoming useless for the people because people are in a starving position. And we have seen there are many areas, Priya, there are many areas, even the area where we are staying, no one got a single drop of water. And just for some photo stations and for the publicity, some people are going, giving a family a 10 rupees bottle. Even in some of the places, 10 rupees bottle are being sold by 100 rupees, 50 rupees. So you can understand how the situation is going on. People are starving for getting a single drop of water.